Their swords and rifles shimmering in the morning light, pledging fidelity to the motherland. On their shoulders will rest enormous responsibilities, which they will fulfill with honor. 1942 में वंशीधर शुक्ला द्वारा रचित कदम कदम बढ़ाए जा उन पर आगे बढ़ता ये मार्चिंग दस्ता. These young and passionate catalysts of the army will be guarding frontiers and posts located at towering altitudes in the ice-capped mountains on craggy frontiers where other than the enemy, survival against the fury of nature is a challenge in itself. Whether it is the glaciers in the north, the desert frontiers in the west, or the inhospitable jungle terrain of the east, these young men and women will safeguard the borders of the nation, always and every time. It is their utmost duty to ensure the defense of the motherland. The whole nation takes pride in them, and the land resonates with their praise. They, for their country die, shall fill an honored grave. For glory lights the soldier's tomb, and beauty keeps the brave. वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में बजा रहे, सैन्य दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, रात हो कि रात हो. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान की गौरव गाथा बयां करने के साथ साथ कभी इकबाल के अमर शब्द, भारतीय सैनिक के समर्पण एवं स्वाभिमान कई कहानी भी खुद में छुपाए हुए. Leading the parade is Academy Under Officer Piyush Timri. Next is Khetrapal Battalion Appointments, Battalion Under Officer Dhruv Kulse and Battalion Cadet Adjutant Ayush Babu. The first contingent is Gurez Company, commanded by Senior Under Officer Abhash Mahathir. The second contingent is Kandahar Company, commanded by Senior Under Officer Gagan Kumar. Now, battalion appointments will be marching past the saluting dais. Battalion Under Officer Mukta Singh and Battalion Cadet Adjutant Ankit Yadav. The third contingent is the Kumar Company, commanded by Senior Under Officer Palash Rajwaha. The 8th round block was by Colonel Rahul Bakhodiya, co-piloted by Sepoy Adya Shankar, displaying the national flag. The contingent now in front of the saluting dais is Brazavla Company, commanded by Senior Under Officer Kunal Karangi. The second aircraft displaying the Indian Army flag and Eastern Army Command flags, flown by Havaldar Vijay and co-piloted by Havaldar Kartik. Marching next towards the saluting dais is Academy Cadet Adjutant Golu Kumar. And moving behind the line of contingent, the Academy Adjutant Lieutenant Colonel Prakhar Khagar astride the magnificent payload. Ladies and gentlemen, the military brass band playing in front of you are the Officers Training Academy, Gaya, Army Air Defense Gopalpur, Grenadiers Military Band, headed by Nayak Subedar Dharamveer Yadav. आज की परेड में अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया, आर्मी एयर डिफेंस सेंटर गोपालपुर एवं ग्रेनेडियर्स मिलिट्री बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं नायक सूबेदार धर्मवीर यादव. देवियों और सज्जनों, सेना और संगीत का संबंध बहुत पुराना है. प्राचीन काल में युद्ध आरंभ, विराम एवं विभिन्न चरणों का पता संगीत से ही चलता था और इसी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी सेना के सभी रेजिमेंट के अपने बैंड हैं. The
The history of Indian Army is replete with saga of courage and sacrifice. Our brave soldiers and officers have fought courageously and rooted the enemy whenever dared to violate order and threaten the stability and honor of our motherland. With utter disregard for their own personal safety, these gallant brave hearts have always displayed steadfast resolve to face all adversities unflinchingly and safeguard our nation's territorial integrity. Our valiant soldiers have earned laurels for the nation in field of sports and adventure activities. The names of the brave hearts and achievers of the Indian Army are etched in golden letters in the annals of our rich history. Their bravery and selfless sacrifice inspire generation after generation of soldiers and officers. We are sanguine and confident that the officer cadets of SSC Tech men and SSC Tech women who will soon join the Indian Army officers cadre will live up to the highest traditions and motto of the Indian Army, Seva Paramo Dharma, which translates to service before self. मेरे सांसों, मेरे लहू, मेरे बदन में रहा, मेरा मुल्क हर वक्त मेरे जहन में रहा। मैं मरा तो अंदाज भी इतना गजब था, तब भी यह तिरंगा मेरे वतन में रहा। अगर आपको जिंदगी में असली जाबाज देखते हैं, तो आपको सीमाओं पर तैनात उन जवानों को देखना चाहिए, जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। कभी ठंड में ठिठुर के देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। युद्ध क्षेत्र में मैं बेशक पड़ा हूँ, धूल में कट कट के क्षेत्र अनजानों में, हर एक तिरंगा फहर रहा मेरे अंग बेजानों में। और साइड में किसी